हेलो माय डियर स्टूडेंट्स समस्त को फ्रेंड आउ गोटे वीडियो लेक्चर में आपको वेलकम करुँची। तो चलते फ्रेंड आम डिस्कसन को आगे बढ़ेगा एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग द सेमीकंडक्टर। फ्रेंड प्रीवियसली आम जहाँ भी पढ़ी एनर्जी बैंड डायग्राम आम बनई सेमीकंडक्टर आम देखी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड मध्य मात्र 1 इलेक्ट्रॉन वोल्टर गैप रोचे और सेमीकंडक्टर बैंड जो ओडिया जब आम कह किसी परिमाण फ्रेंड करंट फ्लो हो पाए आम सेमीकंडक्टर कहू। इट लाइज बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर। So friend, as we earlier discussed, in semiconductor, the gap between the valence and conduction band is 1 electron volt. We can also define it as a semiconductor is a substance whose resistivity lies between in the order of 10 to the power minus 4 to 0.5 ohm meter in between the conductor and insulator. तो आप आउ गोटे डेफिनेसन ये लिखाई सेमीकंडक्टर और से कहुई जो रेजिस्टिविटी रही सेमीकंडक्टर सेटा इन्सुलेटर और कंडक्टर मध्य तार वैल्यू हूँ 10 to the minus 4 to 5 ओम। एग्जाम्पल फ्रेंड वी ऑलरेडी नो सेमीकंडक्टर विषय में जाने सिलिकॉन जर्मेनियम कार्बन सेलेनियम भी गोटे अच्छी फ्रेंड जोटा कि सेमीकंडक्टर हिसाब से अपर VLSI स्टेज व्यवहार कराए। तो फ्रेंड व्हाट इज रेजिस्टिविटी जब आप मन थी फ्रेंड आम रेजिस्टर पढ़ला बेले गोटे फर्मुला लिखी R is equals to rho into L divided by A. This implies rho is equals to R into A divided by L. जो जा फ्रेंड R हो the resistance, A हो our area of the conductor, L हो friend this length of the conductor. This rho is called friend resistivity. ओके तो फ्रेंड यूनिट कौन हो देखो रेजिस्टेंस यूनिट तो फ्रेंड ओम, एरिया यूनिट हो फ्रेंड मीटर स्क्वायर, लेंथ हो फ्रेंड मीटर तो गोटे मीटर काटिदेवा तो ओम इंटू मीटर से फ्रेंड देखो ये लिखाई यूनिट ओम इंटू मीटर। तो से कौन फ्रेंड रेजिस्टिविटी गोटे सेमीकंडक्टर 10 to the minus 4 रु 0.5 ओम मीटर मध्य रही है। आप रेजिस्टिविटी कौन को सूचाए इट शोज the resistance to the flow of current from one part to another। तो गोटे कंडक्टर फ्रेंड गोटे पार्ट रु अन्य गोटे पार्ट पर्यंत one part to another गोटे कंडक्टर फ्रेंड गोटे पार्ट रु आ गोटे पार्ट पर्यंत जो करंट फ्लो होची ताकू जदि फ्रेंड आम रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट जानवा चाहूँगे से फ्रेंड टर्म यूज करा जाए रेजिस्टिविटी व्हिच फॉर्मूला इज R into A divided by L। जदि फ्रेंड आप मन आम डिराइव करते रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कंडक्टर, तापर फ्रेंड कांस्टेंट्स ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रेजिस्टिविटी को आम डिफाइन करते। फ्रेंड मन रखिए शॉर्ट क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन आसी जाए व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर मटेरियल, इट इज इन द रेंज ऑफ 10 to the minus 4 to 0.5 ओम। क्लियर ओके। नेक्स्ट फ्रेंड आसला व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर। Semiconductor have negative temperature coefficient of resistance। फर्स्ट पॉइंट पे सेकेंड पॉइंट कहला व्हेन ए सुइटेबल इम्प्यूरिटी फ्रेंड इम्प्यूरिटी माने कौन जोटा खराब जिनस आम गोटे जिनस जिते गोटे जिनस प्यूरीफाए करुचे ता मध्य जहाँ भी फ्रेंड रही आम रिमूव करुचे से रिमूव को आम इम्प्यूरिटी बोली कहू नॉर्मली। तो व्हेन ए सुइटेबल इम्प्यूरिटी लाइक आर्सेनिक गैलियम इज एडेड टू इट्स करंट कंडक्शन कैपेसिटी चेंजेस। तो फ्रेंड फर्स्ट पॉइंट कहला सेमीकंडक्टर है नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टेंस। फॉर एग्जांपल फ्रेंड आई हैव टेक ए सेमीकंडक्टर लाइक जर्मेनियम सिलिकॉन जो टाइप फ्रेंड आप एग्जांपल हिसाब से नहीं पारे जिते फ्रेंड यार टेम्परेचर लो अच्छी ओके। तो कौन हम फ्रेंड आम जाने देयर इज ए वैलेंस बॉन्ड एंड देयर इज कंडक्शन बॉन्ड। तो वैलेंस बॉन्ड कंडक्शन पर्यंत फ्रेंड कौन सी इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन आम फ्लो हो ना से केस रे फ्रेंड आम जो सेमीकंडक्टर रही इट कैन बिहेव्स लाइक एन इन्सुलेटर ओके। बर्तमान फ्रेंड आप कौन कले टेम्परेचर को इंक्रीज कले टेम्परेचर को बढ़ेले तो टेम्परेचर बढ़ावा द्वारा फ्रेंड गोटे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई है से आम कौन देखिए फ्रेंड वैलेंस बैंड किछिटा इलेक्ट्रॉन आमर कंडक्शन बैंड को ट्रांसफर हेले जो द्वारा फ्रेंड आमर जो मटेरियल रही बर्तमान इट बिहेव्स लाइक एन सेमीकंडक्टर। तो जेहेतु फ्रेंड किसी परिमाण में फ्री इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड कंडक्शन को गला किसी परिमाण में आमर करंट फ्लो ये सब स्टार्ट है बिकॉज वी नो द फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो आम देखिले आमर जो मटेरियल रही नाउ इट बिहेव्स लाइक ए सेमीकंडक्टर।
आम एगेन फ्रेंड जानी फ्रॉम द ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू I डिवाइड बाय R। ओके तो जो वोल्टेज रोचे फ्रेंड से आमर रेजिस्टेंस सहित इनवर्सली प्रोपोर्शनल रोचे तो सहीटा को फ्रेंड जदि सिमिलारली मुझे डिस्कस करी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जदि आम फ्रेंड टेम्परेचर को लो करुचे देयर इज नो करंट कंडक्शन पॉसिबल जदि टेम्परेचर को इंक्रीज करुचे फ्रेंड देन दिस मटेरियल बिहेव ए सेमीकंडक्टर मटेरियल। So in this terminology friend I can say it has a negative temperature friend clearly देखो लिखा है coefficient of resistance बुझी पाले फ्रेंड। ओके नाउ when a suitable impurity फ्रेंड impurity माने कौन आम एक्चुअली जानी देखो सेमीकंडक्टर जेहेतु बहुत कम परिमाण में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुए तो सेटा को जब फ्रेंड आम यूज करने चाहूचे तो आमको करंट कंडक्शन करवा डिफिकल्ट हो कारण से कम करंट फ्लो हो तो आम कौन करा फ्रेंड तार कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी माने तार इलेक्ट्रॉन फ्लोर कैपेसिटी तार करंट फ्लो होबार कैपेसिटी बढ़ावा किछिटा इंप्यूरिटीज आम सेमीकंडक्टर मिसेवा सेटा को फ्रेंड आम ये लिखीचे आर्सेनिक एंड गैलियम। ओके so when suitable impurity added to current conduction capacity changes वर्तमान फ्रेंड से करंट फ्लोर कैपेसिटी बढ़ी जीवो। ओके सेटा बोली फ्रेंड आपनकर सेकंड प्रॉपर्टी रे आपनको कहै छी क्लियर। नेक्स्ट फ्रेंड एबे देखिबा आसंतु बॉन्ड इन सेमीकंडक्टर फ्रेंड बॉन्ड को जीवा अगर मु पुणी टिके पुराना पाठमूल रिकॉल कर जेते आमे केमिस्ट्री रे पढिथिले आयनिक बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सो बॉन्ड विषय रे पढिथिले तो एटी सेही बॉन्ड विषय रे फ्रेंड मु आपनको कहूची। In semiconductor, bonds are formed by sharing of valence electron. Such bonds are called covalent bond. ओके तो फ्रेंड आम पढ़ी आयनिक बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड केमिस्ट्री कोवैलेंट बॉन्ड कौन कहे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल मैंने सामान भाव में दुईटा आटम मध्य इलेक्ट्रॉन देवा इलेक्ट्रॉन आठू नवा से बॉन्ड को कहुए कोवैलेंट बॉन्ड। सो लेट मी एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल माय डियर स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड फास्ट धरतु आम जर्मानियम एग्जांपल नहीं ओके जर्मानियर एटॉमिक नंबर के फ्रेंड 32 तो फ्रेंड फास्ट आम सजेबा वी नो इट इज अकॉर्डिंग टू द रूल 2n स्क्वायर जो जार n हो फ्रेंड आमर नंबर ऑफ ऑर्बिट तो धरते फ्रेंड n रो वैल्यू आम फास्ट नंबर 1 फास्ट ऑर्बिट n रो वैल्यू 1 तो केतरा इलेक्ट्रॉन रहिबो फ्रेंड 2 into 1 रो स्क्वायर दुईटा n is equal to 2 so 2 into 2 रो स्क्वायर 2 रो स्क्वायर 4 4 दुने केतरा फ्रेंड 8 n is equal to हेगला फ्रेंड 3 2 into 3 रो स्क्वायर 3 रो स्क्वायर हेगला फ्रेंड 9 9 दुने हेगला 18 n is equals to फ्रेंड आसला तो केतरा हेगला देखि दो फ्रेंड टोटल हमको 32 टा दरकार 8 और 2 हेगला 10 10 और 18 हेगला फ्रेंड केते 28 तो फोर्थ ऑर्बिट रे फ्रेंड केतरा 28 चारटा हमको दरकार 4 इलेक्ट्रॉन्स कारण चारटा इलेक्ट्रॉन रहिले फ्रेंड्स आमर कंप्लीट हो जाउछि देखो 32 टा करदेबा 8 10 10 8 18 18 10 ହେଲା 28 28 ଆଉ 4 ହେଇଗଲା 32 तो टोटल फ्रेंड हम 32 एटॉमिक नंबर ताको आमे ऑर्बिट रे सदै ओके तो जदी फ्रेंड धरंतु दिस इज द जर्मेनियम केतरा फ्रेंड लास्ट ऑर्बिट रे हमर केतरा इलेक्ट्रॉन रहिला चारटा तो चारटा इज आवर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 करेक्ट ठीक से फ्रेंड आ भी जो जर्मेनियम एटम जदी थिबो सॉरी एलिमेंट तार केतरा हबो 1 2 3 4 वर्तमान फ्रेंड ये या सहित बॉन्ड बनेबो म्यूचुअल शेयरिंग फ्रेंड दी जण को देबे तो इन बेसिक्स पर कहि परिबी यार चारटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन यार भी चारटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन दी जण फ्रेंड कौन करेंगे म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे आम जानी फ्रेंड ये म्यूचुअल शेयरिंग को ही कोवैलेंट बॉन्ड बोली कह जाए और जो म्यूचुअल शेयरिंग कर यार चारटा एटे आसले एटी फ्रेंड हो 8टा इलेक्ट्रॉन्स एटी हो फ्रेंड 8टा इलेक्ट्रॉन सो दिस सैटिस्फाई द ऑक्टेट रूल ओके फ्रेंड तो ये अनुसार फ्रेंड्स आम कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग होता है आउ एटू आज आम जानले फ्रेंड जी भी हमको पचार इन सेमीकंडक्टर मटेरियल व्हिच टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म दैट इज द कोवैलेंट बॉन्ड मीन म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम्स पूरा क्लियर ठीक जमी आप जर्मेनियम करें फ्रेंड सेम से सिलिकॉन भी आप देखिपारे सिलिकॉन एटॉमिक नंबर हूँ 14 ये अनुसार फ्रेंड सजेक आप भी देखिपारे ओके नेक्स्ट
तो नेक्स्ट फ्रेंड देखा कॉमनली यूज्ड सेमीकंडक्टर। तो फ्रेंड देखा गले तो बहुत गुड़ा सेमीकंडक्टर अच्छी किंतु इन द इलेक्ट्रोनिक्स इंडस्ट्री बेसिकली फ्रेंड दी प्रकार सेमीकंडक्टर को सबुआड़े व्यवहार कराए। आप ना शुणिथे फ्रेंड वन सिलिकॉन एंड जर्मानियम। सिलिकॉन चिप्स विषय आप शुणिथे इंटीग्रेटेड सर्किट जो बना हुए से व्यवहार कराए। तो मैक्सिमम जगह फ्रेंड सिलिकॉन और जर्मानियम को व्यवहार कराए कारण फ्रेंड एम गोटे बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी रही कम जिते आप पोटेंशियल डिफरेंस की इलेक्ट्रिक फील्ड आप एप्लाय करुँच से फ्रेंड ब्रेक होटू करेन्ट कंडक्शन हो पाए। तो से फ्रेंड यही दी जन को बेसिकली इलेक्ट्रोनिक्स इंडस्ट्री में जिते आप माइक्रोचिप देखुं सीपीयू टर्मिनाल देखुं सब जगह फ्रेंड ये दी जनकर व्यवहार रही राइट। तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज सेमीकंडक्टर आर जर्मानियम जीई एंड सिलिकॉन because कारण the energy required to break their covalent is very small। ए भी जस्ट फ्रेंड आम कोभालेंट बॉन्डिंग विषय पढ़ी थे आम जाने फ्रेंड जिते गोटे बॉन्ड ब्रेक हुए से लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुए और से एनर्जी फ्रेंड आमको हेल्प करे फॉर द करंट कंडक्शन। से फ्रेंड ये दी जनकर यूज कर मुख्य रिजन हूँ जिते बड़े आम गोटे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करुचे गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड से सप्लाई करुचे बहुत कम एनर्जी फ्रेंड से बॉन्ड ब्रेक हो से ब्रेक होगा द्वारा फ्रेंड जो एनर्जी रिलीज होती आमको करंट कंडक्शन कर हेल्प करुँच। फ्रेंड ये दी जन को इंडस्ट्री में व्यवहार कराए। ये फ्रेंड क्लीयरली आम डाटा अनुसार भी लिखिपर फॉर जर्मानियम दिस एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक इज 0.7 EV। EV मीन्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर सिलिकॉन फ्रेंड टिके अधिका देयर इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट मीन्स इन टर्म ऑफ जदि आम एनर्जी लेवल डायग्राम भी जदि बनैबा फ्रेंड देखो आम ऑलरेडी जानिछे दिस इज आवर वैलेंस बैंड, दिस इज योर कंडक्शन बैंड। तो ये जर्मानियम अच्छी द फॉर्बिटन एनर्जी गैप केते हेबो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट मीन्स एतिकी एनर्जी हमको दरकार टू ट्रांसफर द बैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस बैंड टू दी कंडक्शन बैंड। ठीक से फ्रेंड सिलिकॉन जदि आम बनैबा एनर्जी लेवल डायग्राम कितने फ्रेंड 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके तो देखुं फ्रेंड ये कम एनर्जी रे भी आमर जो बैलेंस फ्री इलेक्ट्रॉन रही है आम कंडक्शन मेन को ट्रांसफर कर। तो फ्रेंड जो भी आम इलेक्ट्रिक फील्ड हो अप्लाई करवा दैट शुड बी एबल टू ब्रेक कोवैलेंट बॉन्ड से फ्रेंड कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर और से फ्रेंड जो एनर्जी रिलीज हम दैट विल हेल्प अस फॉर दी कंडक्शन ऑफ करंट और मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। कारण आम जानी फ्रेंड करंट क्या द्वारा फ्लो हुए ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कंडक्शन ऑफ करंट और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको हेल्प कर। ओके तो बुझे फ्रेंड कॉन्सेप्ट ऑफ सेमीकंडक्टर कंडक्टर। नाउ फ्रेंड आसतु आ गोटे कॉन्सेप्ट आम डिस्कस करवा दैट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो आम भी डिस्कस करवा जदि आम गोटे सेमीकंडक्टर लौचे जाए जर्मानियम सिलिकॉन से टेम्परेचर ही डिफरेंस कौन रोचे। तो फ्रेंड फास्ट मुझे कहली एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो फ्रेंड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या कहे एट 0 केल्विन और जब डिग्री सेंटीग्रेड -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एतिकी टेम्परेचर फ्रेंड आमर जो सेमीकंडक्टर मटेरियल जर्मानियम सिलिकॉन से केमती बिहेव कर आम डिस्कस करवा से लिखिली एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। बुझिपारे दैट मीन्स आवर टेम्परेचर फ्रेंड लो अच्छी एट दिस केस हियर all the electrons are tightly held by a covalent bond friends आम भी जस्ट पढ़ले। तो फ्रेंड जेहतु टेम्परेचर आम बहुत कम अच्छे नियरली कौन -273 डिग्री ये जगह जो आम आम इलेक्ट्रॉन फ्लो बन इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा से टाइटली फ्रेंड बॉन्डेड होती से जगह फ्रेंड से पूरा टाइटली बॉन्ड होती दैट मीन्स देयर इज नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बैलेंस टू कंडक्शन बैंड
କ'ଣ ନାହିଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, କାରଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମେ କହିଲେ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଆମର କୋଭାଲାଣ୍ଟ ବଣ୍ଡ ବ୍ରେକ୍ ହେବ ଏନର୍ଜି ବାହାରିବ ତାପରେ ଯାଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଫ୍ଲୋ ହେବ। ତ ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମର ସବୁ ଆଟମ୍ ଟାଇଟଲି ବାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବ୍ରେକ୍ ହିଁ ହେବେନି। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବ୍ରେକ୍ ହିଁ ହେବେନି ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଭାଲାନ୍ସ ବ୍ୟାଣ୍ଡରୁ କଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ହିଁ ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି ପହଞ୍ଚି ନ ପାରିଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କରେଣ୍ଟ ବି ଫ୍ଲୋ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଇ କେସ୍ରେ କହିପାରିବି ଇଟ୍ ବିହେଭ୍ସ ଲାଇକ୍ ଏନ୍ ଇନ୍ସୁଲେଟର। ओके, आ एनर्जी बैंड हिसाब से देखिए फ्रेंड आम जो वैलेंस बैंड अच्छी एटा फ्रेंड कंप्लीटली फुल अच्छी माने इट इज फुल ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। किंतु आम जो कंडक्शन बैंड अच्छी फ्रेंड इट इज एम्प्टी कारण फ्रेंड किसी भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड पर्यंत फ्लो होगी जाई नाहंती। और जो गैप रहिबो फ्रेंड फॉरबिडन एनर्जी गैप जो कहते दैट विल बी लार्ज। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो आम जो 0 डिग्री केल्विन कि -273.16 आम देखुचे जेहेतु टेम्परेचर आम कम अच्छी कोवैलेंट बॉन्ड आम ब्रेक होना। तो जेहेतु ब्रेक होना समस्त इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होती तो कौन भी इलेक्ट्रॉन बैलेंस बॉन्ड रू कंडक्शन बैंड पर्यंत पहुंची पार ना जदि फ्रेंड न पहुंचले करेंट भी आम फ्लो हम ना। तो जदि मटेरियल करेंट फ्लो ना तो आम कौन कह इन्सुलेटर। ओके, तो मन रखे फ्रेंड एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर आवर सेमीकंडक्टर इज जस्ट बिहेव लाइक एन इन्सुलेटर। राइट, एवं आसतु फ्रेंड एबव जिते आम 0 डिग्री केल्विन एबव जावा ताहले कौन हो जिन देखा। The next one is above the absolute zero temperature. तो फ्रेंड मुझे लिखी पारे here the temperature is above 0 Kelvin or -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब above रे देखिबा तो जेते फ्रेंड टेम्परेचर बढ़िला when temperature increases temperature rise कले तो आम जानी फ्रेंड नाउ इन ए सेमीकंडक्टर कोवैलेंट बॉन्ड इज देयर ड्यू टू दिस तो कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक्स भांगी गला फ्रेंड ड्यू टू दिस ब्रेक्स वी आर गेटिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज है दैट मीन्स देयर इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यही एनर्जी फ्रेंड पुश कला इलेक्ट्रॉन को सो देयर इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम co-band to co-band have a friend valence band to conduction band and due to this we are getting small amount of flow of electricity okay, so this is the concept। तो फ्रेंड आम कौन देखिले जो टेम्परेचर को आम रेज करुचे टेम्परेचर जो बढ़ला फ्रेंड गोटे एनर्जी सप्लाई है एनर्जी जो सप्लाई है जो कोवैलेंट बॉन्ड से टाइटली बाउंड करते से भांगीगला ब्रेक होगा बर्तमान फ्रेंड इलेक्ट्रॉन गुड़ा से बाहर आ जेहेतु फ्रेंड आम जाने सेमीकंडक्टर जो गैप रही है कम रही है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सॉरी वैलेंस बैंड जो इलेक्ट्रॉन गुड़ा रही है बर्तमान एनर्जी पाइबा द्वारा से धीरे 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 कंडक्शन बैंड को फ्लो है जो गले फ्रेंड इलेक्ट्रॉन फ्लो है इलेक्ट्रॉन फ्लो है करेंट भी कंडक्शन है तो बर्तमान फ्रेंड आम देखिपारे आम जो material it behaves like an semiconductor। बुझे दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो फ्रेंड 0 डिग्री एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर रे भी आम देखिले एबव द एब्सोल्यूट टेम्परेचर कौन हम सेटा भी देखिले। ओके, नेक्स्ट तो फ्रेंड गोटे नुआ हेडिंग नहीं आसली नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉन्सेप्ट ऑफ होल करंट। तो फ्रेंड नुआ जिनस गोटे होल करंट कौन आसतु देखा। तो ठीक है फ्रेंड सेमीकंडक्टर विषय में आम चिंता करवा। दिस इज आवर वैलेंस बैंड एंड दिस इज आवर कंडक्शन बैंड। दिस इज द गैप आम जानी फ्रेंड कौन सेमीकंडक्टर द गैप इज नियरली इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। There free electrons are there
तो फ्रेंड एबे जस्ट हम डिस्कस कले व्हेन वी आर इंक्रीज द टेम्परेचर को आम जिते बड़े इंक्रीज करेले above the absolute zero temperature, we see that some of the valence electron can move to the conduction band. Our friend our material just behave like a semiconductor. तो फ्रेंड जिते बड़े आम एनर्जी कौन है आमर कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक है कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक्स and electron moves from valence band to conduction band. आम समस्त जानी फ्रेंड इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज आयन तो जिते बड़े फ्रेंड भालांस इलेक्ट्रॉन गोटे इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल फ्रेंड ए इलेक्ट्रॉन धरतु ए टू ए पर्यंत गला तो फ्रेंड इलेक्ट्रॉन एठू पळेला वर्तमान फ्रेंड एटी गोटे होल हो गला पुणी फ्रेंड गोटे इलेक्ट्रॉन एठू गला एटी गोटे होल हो गला तो फ्रेंड मैं कहि परबी मिसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन is called hole which act as positive charge मो कथा बुझीपारे फ्रेंड जिते बड़े भी गोटे इलेक्ट्रॉन आम भालांस बॉन्ड को कंडक्शन पर्यटन फ्लो होची केतरा होल क्रिएट हो फ्रेंड गोटे पुणी गोटे इलेक्ट्रॉन गला गोटे पुणी गोटे इलेक्ट्रॉन गला गोटे पुणी गोटे इलेक्ट्रॉन गला गोटे एटी भी फ्रेंड सेमती तो धरत फ्रेंड 8टा जब इलेक्ट्रॉन आम भालांस बॉन्ड को कंडक्शन पर्यटन जाइए तो केतरा फ्रेंड होल क्रिएट है 8टा आमर होल क्रिएट है और जेहेतु फ्रेंड इलेक्ट्रॉन आमर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जब रिमूवाल होती तो फ्रेंड आमर होल कौन हम इट मस्ट बी ए पॉजिटिवली चार्ज आयन ओके तो फ्रेंड आम गोटे जिन मार्क करें जितरा इलेक्ट्रॉन भालांस बॉन्ड कंडक्शन बॉन्ड को जाऊँगी से आमर चार्ज सॉरी से होल क्रिएट होती तो मुझे कहीपर फ्रेंड दिस कन्स्टिट्यूट होल इलेक्ट्रॉन पेयर और नहीं फ्रेंड कारण जितरा इलेक्ट्रॉन जाऊँगी से होल क्रिएट होची तो मुझे कहीपर फ्रेंड दिस होल कंबाइन्स ए कन्स्टिट्यूट ए होल इलेक्ट्रॉन पेयर तो जेहेतु फ्रेंड नाउ होल आम देखिले इट इज ए पॉजिटिवली चार्ज आयन तो फ्रेंड आप निजे कहतु जदि ये पॉजिटिवली चार्ज है ये कहाँ अट्रैक्ट हो फ्रेंड टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल okay negative terminal को से attract हो friend because this is a positive charge and due to this a flow of current is generated और से फ्रेंड से गोटे करंट रो फ्लो आम देखिपर फ्लो ऑफ करंट इज जनरेटेड which is called होल करंट मो कथा बुझीपारे फ्रेंड कौन है आउ थे आम डिस्कस करवा आम तो देखिले फ्रेंड सेमीकंडक्टर केमती होची तो जिते फ्रेंड कौन से गोटे इलेक्ट्रॉन बैलेंस बोर्ड कंडक्शन बोर्ड को ट्रांसफर होची मिसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होची मैंने इलेक्ट्रॉन पड़ोची इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज से जगह गोटे होल क्रिएट होची तो दैट विल बी मस्ट बी ए पॉजिटिव चार्ज तो जितना इलेक्ट्रॉन फ्रेंड बैलेंस बोर्ड कंडक्शन बैंड को जाऊँगी सेतिकिटा होल आमर क्रिएट होची तो अपने होल जेहेतु गोटे पॉजिटिवली चार्ज से कहाँ अट्रैक्ट हो ऑब्वियसली फ्रेंड नेगेटिव टर्मिनल आगे अट्रैक्ट हो तो फ्रेंड से नेगेटिव टर्मिनल आगे जावाक स्टार्ट करिवो से जो फ्रेंड फ्लो है गोटे पॉजिटिव रो नेगेटिव टर्मिनल दैट कन्स्टिट्यूट ए करंट से गोटे फ्रेंड करंट जनरेशन शो कला ताको हम कहबा फ्रेंड होल करंट क्लियर बुझी पाले फ्रेंड सो दिस इज द कांसेप्ट रिगार्डिंग द होल करंट ओके तो फ्रेंड आम गोटे जिन जापारे जिते बड़े गोटे सेमीकंडक्टर मटेरियल करंट फ्लो होची आम कौन देखा पाचे फ्रेंड होल इलेक्ट्रॉन पेयर माने फ्रेंड दुई कारण होल जी रोचे इलेक्ट्रॉन से रोचे गोटे इलेक्ट्रॉन मिस होची गोटे होल क्रिएट होची सो टुगेदर वी कैन से दे फॉर्म ए होल इलेक्ट्रॉन पेयर बुझीपारे फ्रेंड तो ये वीडियो फ्रेंड एति कॉन्सेप्ट ऑफ होल करंट रही नेक्स्ट आहरी भी केतरा सेमीकंडक्टर कॉन्सेप्ट रही मुझे गोटे वीडियो से आसबी ओके।